can reach a decision, and then once you implement it, you can evaluate it periodically to see if the system that you have put in place is working or not. Now, very quickly, what are the novel agents in the pipeline? So, and the role of technology, the novel agents in the pipeline, you have all heard of Mounjaro, which is an agent which has GLP-1 and GIP combined. Now, the other agents which are nearly there, and hopefully we'll see them very soon, is that in place of a GIP, amylin, which is, as you know, a pancreatic islet cell hormone, that is co-secreted with insulin. That hormone is also decreased in amount in diabetes, particularly type 1 diabetes. So we are now seeing amylin and GLP-1 dual receptor agonists being developed, and triple receptor agonists, which would be the addition of glucagon onto the GLP-GIP combination. So these are triple receptor agonists, which are going to stimulate the breakdown of glycogen and gluconeogenesis. So basically, these agents are going to be available, inshallah, in the very near future. What about technology? Basically, what we have is that the number of patients with diabetes that we have to deal with is exploding, as you all know from your own practices. Therefore, the role of technology becomes very important, and technology allows us, just like this remote patient monitoring study that we did, and we are now ready to implement across our system, is where we monitor patients at their homes with using their simple glucometers, and we can intervene before their 3-month visit when the damage is already done. That is the focus of where we are using this remote patient monitoring technology, which has been developed in Pakistan, so to affect our patients before any complications happen. So this is something that we are going to, as I said, implement across our system for various diseases, not just diabetes. And what about electronic health records? I understand that, electronic health records are not that popular, but the impact of electronic health record is that we are able to go ahead and put in reminders to ourselves, because you can't remember everything about every patient. So in our electronic health records, just one tiny example, if the eye exam or the foot exam is beyond that stipulated period of time, let's say a year, our electronic health record informs us that this person is beyond a year, do something about it. And it also helps us get a basic understanding of what our patient population is doing and what sort of effects we can put in at a larger scale than an individual patient. So to conclude, what I would like to say is that now we have moved beyond glucocentricity to a more holistic approach in diabetes care, and this involves multidisciplinary teams as well as taking care of other risk factors, managing their dyslipidemia, their hypertension, looking at the renal and cardiac complications, and intervene much earlier, as well as working with the other specialties such as our friends in cardiology, nephrology, neurology in early course of disease, because once complication is set in, the train has left the station already. So early diagnosis and management of cardiovascular disease remains our primary focus to avoid morbidity and mortality. We need to focus on our own continued education, because as I showed you, just within the last 15 years, how things have changed over time. We need to adapt new evidence-based practices, the studies that I have showed you, as well as emerging technologies to manage diabetes and its complications. So I would like to thank you all for your time, and I would like to once again really, really apologize for the technology, disturbances, but I hope that I was able to carry across the message that you see on your screen today. So thank you very much. Ask Professor Hafiz Chaudhry Saab for a vote of thanks to you. Because of time constraint, we are not taking any questions. No, Professor Recording Hamid, stopped. Thank you very much. It was a great honor and privilege to listen to you, and thank you very much to be the part of our. You can't hear us? अभी फिर ऑडियो का मैसेज आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रही.
Hello? Hello? Can you hear us, Professor Ahmed? Now I can, sir. Before not. Now I can. Yes, you can. Thank you. So thank you, artist. It was a great honor and privilege to listen to you. Great presentation. And Thank you, sir. just one question. What is your approach to the patient who are on SGLT2 inhibitors undergoing primary PCI in acute coronary syndrome scenario? So, sir, I think now, the recent recommendations are that we need to put that on hold for at least a couple of days before, if at all possible. And then once you are done and then you have the renal parameters checked that there is adequate hydration, you can go ahead and start that, because as a cardiologist, they are using SGLT2, I think, in our here more than we are using for diabetes. So, which is a great thing. I mean, whatever helps the patient. Okay. Thank you very much for your participation. Thank you. So really appreciate the opportunity. Thank you very much, Dr. Hamid. On the behalf of High Noon, we are really thankful to all of you. We believe on enriching life of clinician as well. For that, we have created one awareness campaign, and I would like to see all of you one of the great initiative of High Noon for this sedentary lifestyle of the clinician as well. When we are talking about for patient benefit, patient welfare, well-being, when we should not forget the role of our clinician in treating diabetes as well. May we play the video, please? Man, may we start from the ये नहीं beginning? देखती कि हम कितने चैलेंजेस से लगते हैं, कितना कुछ अचीव किया और कितना कुछ बाकी है। ये तो बस इतना देखती है कि हम इसके लिए क्या करें। तो चाहे आप स्पोर्ट्समैन, एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर या फिर किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हो, आपका लाइफस्टाइल ही आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस का फैसला करेगा। तो चले इस बार अपने प्रोफेशनल गोल्स के साथ साथ अपने हेल्थ गोल्स भी सेट करें, ताकि हम अपना और अपने प्यारों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकें। और हाई नून के साथ मिलकर लेट्स वर्क टुवर्ड्स एनरिचिंग लाइफ। Pakistan ranks number 1 in prevalence of diabetes. Intervention is imperative. Besides lifestyle intervention, uncontrolled diabetes needs a therapeutic intervention that offers ease, efficacy, adherence, safety, and economy. Thank you very much for all of you. Thank you. Thank you very much, Mr. Atiq. Our last lecture will be done by one of the eminent doctor, Dr. Fawad Randhawa from Lahore. He will be delivering lecture on Semaglutide. Dr. Fawad Randhawa. Thank you, sir, for inviting me. As it is the last lecture, I will try not to repeat the things which are already being done. So hopefully, it will have a very great impact on you. Slides चलेंगी तो start होगा. जी सर, मैं यहाँ से चल लूँगा स्पीकर. ब्राइटनेस फुल कर दूँगा बहुत है. क्या चीज़? ब्राइटनेस ठीक है बेटा. चूँकि हाशमी साहब बैठे हुए हैं, तो ये टॉपिक इसलिए मेरे दिल के करीब है कि सर आउटसाइड डायबिटीज़ भी कुछ बोलने का मौका कभी कभी मिलता है, और आज आपकी फील्ड की चीज़ के लिए मैं लेकर आया हूँ, और आप और मैं शायद इस ड्रग पर एक ही पेज पर होंगे. जस्ट 1 or 2 couple of things, और आप मोस्ट लाइकली यू टेंड टू डिसएग्री विद मी, ये मेरा ख्याल अब नहीं करेंगे, इसलिए कि वो चीज़ ही ऐसे बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ आज ऐसे. जैसे सामने तो आ रहा है, ये इसलिए वो नहीं हो रहा सर जी.
My talk will just be focusing on metabolic disorders of novel GLP-1, which means outside diabetes we have a thing or two which should be pondered over. And ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है अब, बिकॉज आप गाइडलाइंस 3 या 4 ही पढ़ते हैं, एस, एडीए एंड ईएससी, कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ बैठे हुए हैं. GLP-1 स्टैंड्स वे अहेड विद एवरीथिंग, बिकॉज कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 चीज़ों के अलावा वो 1-2 मिनट में आपको बता दूंगा. यू कैन डेफिनेटली पुट द पेशेंट्स ऑन दिस मेडिसिन सेफली विद और विदाउट इवन बाइगोनाइड्स. हम कन्वेंशनली जब पढ़ते थे, आपको पता ही होगा, आई एम काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ तो सर आपको एग्री करेंगे, पहली दवाई मेटफॉर्मिन, दूसरी दवा एसयू, तीसरी फिर DPP-4 जब आई थी, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, फिर इंसुलिन, और उसके बाद वी विल कॉल इट अ डे. नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड. Only one thing has to be answered, whether the patient is obese, whether the patient has any form of ASCVD. और ASCVD पे 1 मिनट लूँगा. ASCVD का मतलब कतन MI नहीं है, MI के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं. A patient having any of the things like stroke, or the patient has got peripheral artery disease. Any of these things are ASCVD mimickers. You should opt a person things which actually tries to protect it and not to progress it. GLP-1 is the answer. We actually focus, हम जो भी आप फॉलो करें, हम नॉर्मली एंडोक्राइन में एस को फॉलो करते हैं, एडीए भी हर्ज नहीं है और ना ही ईएससी हर्ज है. इन तीनों के अंदर GLP-1 अलॉन्ग विद, जो सर ने अभी सर फारूकी साहब से सवाल पूछा था, SGLT2 इज़ द आंसर. और इसमें सर वो जो आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट था, वो 2 दिन पहले बंद करना होता है. GLP-1 का तो वो भी आंसर नहीं है, अब ना बंद करें. जैसे कि 1 हफ्ते पहले अगर खुदा ना खास्ता मुझे MI हुआ और मैंने आज ही इंजेक्शन लगाया, तो अगले हफ्ते से आने से पहले आपने मुझे प्राइमरी PCI कर दी, तो GLP-1 अगले हफ्ते वाला लगा लें. तो ये मैंने आपसे अर्ज की थी. जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो हाशमी साहब एग्री करेंगे, बैक इन ईयर जब रेजिडेंसी कर रहा था, खुदा ना खास्ता किसी को CLD हो गया, रिस्पेक्टिव ऑफ टियोलॉजी, कुछ ना सोचो, इंसुलिन पे डाल दो, कुछ नहीं हो सकता, LFTs भी खराब हैं. नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड. मैश मेसल्डी, जो पहले नैश और नेफिल्ड का नाम से मशहूर था, कमाल तब है जब आप मैफिल्ड के वक्त में मरीज को पकड़ें, अल्ट्रासाउंड मरीज करके आ जाए. इसमें अगर 200 लोग बैठे होंगे यहाँ पर, तो सर एग्री करेंगे 170 को फैटी लिवर निकलेगा अल्ट्रासाउंड पे. ज़रूरी नहीं कि LFTs ख़राब हों. LFTs ख़राब होने का इंतज़ार ना कीजिएगा प्लीज़. यू कैन ट्रीट दैट पेशेंट इफ़ द पेशेंट इज़ डायबिटिक, आइडियली विद और विदाउट मेटफॉर्मिन. आप GLP-1 शुड बी योर मेडिसिन ऑफ चॉइस, बिकॉज अब तो रिसर्च ये भी आ गई है कि हिस्टोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी हो जाती है. हिस्टोलॉजी सर एग्री करेंगे अब इतनी कॉमन रही नहीं, बिकॉज ऑफ द सरोगेट क्लिनिकल मार्कर्स फॉर हेपेटिक इनसफिशिएंसी. तो सारे अक्रॉस द बोर्ड, ये स्टडी इतनी पुरानी नहीं, 2023 की है. द पेशेंट विद और विदाउट डायबिटीज हैविंग ऑल द रिस्क फैक्टर्स फॉर मैश शुड बी ऑन GLP-1, विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिंग द हिस्टोलॉजी. सेमाग्लूटाइड 8 पैटर्न्स होते हैं, और मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा एग्री करते हैं. कुछ हम आंसर भी नहीं है हमारे पास क्यों डायबिटीज़ होती है. उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 6 पैथोफिजियोलॉजीज को एड्रेस करता है. द कॉमनेस्ट बीइंग डिक्रीज इन एपिटाइट, डिक्रीज इन द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन, विच इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. इफ़ यू डिक्रीज द ग्लूकागॉन फ्रॉम द बॉडी इन अ डायबिटिक पेशेंट, आपने काफ़ी मसले हल कर लेते हैं. दिस इज़ द सक्सेस की जो रीज़न है, वो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है. बाकी चीज़ें डेफिनेटली हैं ही. So this is why GLP-1 is so important. Beyond diabetes, it actually causes the improvement in cardiometabolic health by decreasing the inflammations. और inflammation is the culprit of everything. चाहे obesity से लेकर कैंसर तक ले जाएं, एंटी इन्फ्लेमेटरी और बायोलॉजिक्स जो आ रहे हैं, सब का मोलेकुलर लेवल पे टारगेट यही है. दैट्स द सक्सेस स्टोरी. एंड आई विल, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, 1 से 2 मिनट लूँगा. आई एम ट्राइंग टू promote my talk and my point by giving you the evidence of sustained trial, जो कि hallmark है across सारे trains, depending upon which medicine is being compared with GLP-1. ये सारे trials हैं, और इसमें आप देखें dark blue रंग की चीज़ है. upper well level is showing reduction in HbA1c, lower level is showing the decrease in the body weight, and blue line is 1 milligram of semaglutide, and light blue line is 0.5 milligram of semaglutide. Dark blue line actually stood quite far away, और in terms of effectiveness, जिस तरह उन्होंने कहा एज भी अगर आप करें तो उसके जुमरे में भी पूरी आती है. तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव in terms of everything you want to address. But yes, it comes with some side effects, और वो notorious तरीन side effect GI के ही हैं, और that is the most common thing why you don't give it or you have to stop it. 4 gut symptoms. Pancreatitis का एक हाइप है,
स्टैटिस्टिकली प्रूव हो चुका है कि थ्योरेटिकली पेंक्रेटिस से क्रिएट कर सकता है, लेकिन असूलन जितने भी आरसीटीज हुई हैं, पेंक्रेटिस नॉट दैट मच स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, यस, बट अ पेशेंट, जितनी मेरी थोड़ी सी क्लिनिकल एक्यूमेन और आप एग्री करेंगे, अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ पेंक्रेटिस भी हो, चाहे वो इटियोलॉजी विल बी आउटसाइड anything which is definitely known like gallstone like pancreatitis और कुछ हो, don't give semaglutide ever, वो मरीज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, चाहे जितने मर्जी एविडेंस आप कर दें कि ये पेंक्रेटिस गॉलस्टोन से हुआ था तो मैं दे सकता हूँ, यस थ्योरेटिकली यू कैन बट शुड नॉट। तो जितने भी GLP-1 है उसके साथ आप अक्रॉस द ट्रायल एडवर्स इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एंड लास्ट ट्रायल सस्टेन 6 ट्रायल विच वॉज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्लेसिबो वर्सेज +1 which is semaglutide 0.5 and 1 milligram, and you can see the graph gets separated quite earlier in terms of primary outcome which is reduction in ASCVD outcome, stroke, non-fatal MI or any sudden cardiac death. And A1C was definitely, वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि A1C कम होगा तो sustainable effectiveness आएगी। in terms of blue वाला 1 milligram है, light blue वाला 0.5 है, ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। Some people do respond to 0.5, ज़रूरी नहीं है कि उनको 1 तक जाएं, इसलिए कि 0.5 वाले मरीज़ अगर टॉलरेट कर सकता है, वो अक्सर औकात 1 मिलीग्राम पे they get all those symptoms which were not there at 0.5. This was the change in body weight, which is a huge benefit of GLP-1. Why I'm talking about this, because GLP-1 का benefit ही weight loss. This is how you graduate the dosing. You can change it depending upon your clinical acumen. You start off with 0.25. इंजेक्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए बार बार इंजेक्टेबल कह रहा हूँ कि आपको पता है इंटरनेशनली ओरल भी अवेलेबल है, ओरल इज ऑलवेज डेली, ओरल इज नेवर वीकली टिल डेट। 0.25 का 4 वीक्स, देन 0.5, इफ यू कैन क्रिएट द इफेक्टिवनेस यू कैन सस्टेन एट 0.5, अदरवाइज यू कैन एस्केलेट टू 0.1 मिलीग्राम पर वीक। मैक्सिमम रिकमेंडेशन एंटी डायबिटिक डोज 1 मिलीग्राम ही है फॉर सेमाग्लूटाइड, लेकिन सेमाग्लूटाइड एक और फॉर्मुलेशन में भी आती है विच इज आउटसाइड डायबिटीज कंट्रोल, विच इज आउट एंड आउट फॉर वेट लॉस, वहाँ तक आप एस्केलेट कर सकते हैं 2.4 मिलीग्राम तक, लेकिन बिकॉज फोरम ये रेफरेंस्ड फोरम है तो यू डोंट गो बियॉन्ड 1 मिलीग्राम। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Randhawa, for very comprehensive talk. Now we are heading towards closing session. I would like to ask one of the panelists, Dr. Naresh Kumar from Avicenna Medical College, to have your expert opinion regarding diabetes and the cardiovascular diseases in Pakistan. What are the pitfalls you see when the patient comes to you with MI, with heart failure, with diabetes? What is your experience and expert opinion regarding this in Avicenna Medical College? Thank you so much. Nice talk by Randhawa, one of my favorite speakers. Regarding diabetes, as Randhawa has highlighted about the GLP-1 role, GLP-1 role not only controls in the diabetic complications and myocardial diseases and the SUSTAIN 6 trial, which shows the significant benefit, and after that it is also recommended in heart failure with the preserved ejection fraction, but the dose is quite higher, the 2.4 to 6 milligram. The STEP heart failure trial, which came into market with the heart failure with the preserved ejection fraction, HFpEF. And regarding the GLP-1 and SGLT2 inhibitors, why we are prescribing all these medicines, the question was asked about one of our seniors, about the glitazones and other anti-diabetic drugs were compared, not only compared with these drugs. Remember one thing, all anti-diabetics, when initially were observed that only decreasing glucose level or hemoglobin A1C is not sufficient for the cardiac complications. These patients had more complications and died earlier. So that's why there was a need for those drugs which act on endothelium and heart itself. These anti-diabetic drugs, including SGLT2 and GLP-1, has the additional beneficial effects on endothelium and myocardial cells. That's why they have the beneficial effects. That's why now no anti-diabetic drug can be marketed if they don't have any
cardiovascular benefits. We have to consider not only the controlling blood glucose level, सिर्फ hemoglobin A1C कम करना या ये कह देना डॉक्टर साहब मेरी शुगर अब कंट्रोल